So today we will do the theorem related to the non-measurable set. So what is the theorem states? Prove that there exists a non-measurable set in the interval 0 to 1. ठीक है जी, हमें प्रूव करना है कि इस इंटरवल में एक नॉन मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करता है. So first of all, we will do the theorems in steps. Step 1. Define the relation on the set I, which is equal to this, such that x y के इक्वलेंस रिलेशन आप इसमें डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है जी, दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज अ रैशनल नंबर. If the difference of x and y is a rational number. So firstly, for all x, y belongs to R. So firstly, we shall prove that the relation, this is an equivalence relation. Right? So a relation equivalence कब होता है? When it is symmetric, reflexive, symmetric and transitive. So one by one we will prove all the properties. Number one, you will write reflexive. For x and y belongs to I, x is equivalent to y if x minus y is a, I will write, is a rational number, belongs to Q, right? So as x minus x is equal to 0 and 0 is a rational number, it implies x is equivalent to, next is symmetric. Symmetric means x minus x is equivalent to y implies y is equivalent to x. As x is equivalent to y, it implies x minus y belongs to Q. Matlab it is a rational number, right? If 7 is a rational number, minus 7 is also a rational number. It implies minus of x minus y belongs to Q. It implies y minus x belongs to Q, implies y is equal to x. So next is the relation of transitive. Transitive relation. X is equivalent to y, y is equivalent to z, it implies x is equivalent to z. As x is equivalent to y, it implies x minus y is a rational. X minus y is a rational. And y is equivalent to z implies y minus z belongs to Q. It implies, so as x minus y is a rational number, y minus z is a rational number, and rational number, it is closed under addition. Therefore, this also belongs to Q. It implies x minus z belongs to Q. It is a rational number. Therefore, x is equivalent to. Therefore, the given relation is transitive. Hence, the relation is equivalence relation. Hence, the relation, this is an equivalence, relation. This is an equivalence relation. ठीक है जी? Now, this equivalence relation कौन सा? ये वाला. Partitions क्या करेगा ये?
this partitions the set I into mutually disjoint equivalence classes. इसका मतलब क्या है? That is, any two elements of the same class differ by a rational number, while those of different class differ by irrational number. So what does it mean? Right? So क्या कहा उन्होंने कि इस पार्टीशन ने क्या करना है, ये जो I था हमारा, I क्या है? इंटरवल पूरा नंबर लाइन पे, दिस इज द इंटरवल 0 to 1. इसको डिफरेंट म्यूचुअली डिस्जॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में ये बट गया. ठीक है जी, इस तरह से ये इक्विवेलेंस क्लासेस में बट गया. ठीक है, ये मतलब इस तरह से आप ले सकते हैं. ये सपोज करो दिस वन. ठीक है जी, तो ये ऑल आर म्यूचुअली डिस्जॉइंट क्लासेस. और अगर मैं दो क्लास, ये अगर मैं एक मेंबर उठाती हूँ, सपोज करो इसका सेट मैं नाम दे दूं A1 A2 A3 A4, इस तरह से मैंने, आई एम राइटिंग अगेन. ठीक है जी, यहाँ पे हमने ड्रॉ की, हमने लाइन रिप्रेजेंट कर दी, 0 to 1 है यहाँ पे. Here you have taken 0, here you have taken 1. So सपोज करिए ये जो है इसमें ये बट जाता है डिसजॉइंट क्लासेस में. ठीक है जी. So if I will take the two members from the same class, X and Y, they are coming from the same class. Suppose करो A1 में से आ रहे हैं, तो they are differ by a rational number, right? और suppose करो यहाँ से मैंने एक X यहाँ से उठाया और दो यहाँ से उठाया, इनका जो difference है, they differ by an irrational number. So this is the logic behind this set of mutually disjoint equivalence classes. So by axiom of choice, now you will write by axiom of choice, there is a set P which contains exactly one element from each equivalence class. हमने एक सेट P बनाया which contains exactly one element from each equivalence class. जितने भी equivalence classes हैं उनमें से एक एक मेंबर उठा लिया. ये देखो, इस तरह से हमने जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस है उसमें से एक मेंबर उठा लिया और वो सारी किसके अंदर बंद कर दे? P के अंदर. डेफिनेटली 0 to 1 इंटरवल के, तो P भी किसके अंदर होएगा? 0 to 1 इंटरवल. अब क्वेश्चन ये है, we claim that P is a non-measurable set. कि इक्विवेलेंस क्लासेस के एलिमेंट्स उठा के जो हमने सेट बनाया है, अब जो सेट वो आया है वो मेजरेबल नहीं होगा. दैट विल बी अ नॉन मेजरेबल, राइट? सो नेक्स्ट इज द स्टेप नंबर 2. So first of all, let R0, R1, R2, R3 be a sequence of rational numbers in the interval 0 to 1. ठीक है जी, with definitely
we can express rational numbers in terms of infinite sequence. Why? Because the set of rational numbers is a countable set. Define pi. Pi is p plus ri. It is what? This is a ट्रांसलेट मॉडुलो p. ठीक है जी, पीछे हमने ट्रांसलेट मॉडुलो 1 डिफाइन किया था, e plus y. इट इज ट्रांसलेट मॉडुलो 1 for p. Then if I will put I is equal to 0, then this is p naught is equal to p plus r naught. This is p plus 0. It implies this is equal to p. So therefore p naught is equal to p for I is equal to 0. Step number 3. We shall prove the following result. Number 1. The intersection of pi and pj is equal to 5 for all I not equal to j. Number 2. Union of pi is equal to the closed interval 0 to 1. ठीक है जी, यूनियन जो है वो इंटरवल में कन्वर्ट होगी और कोई भी दो आप ट्रांसलेट मॉडुलो लेते हैं उनकी इंटरसेक्शन अब इसमें क्या है, खाली है. So I am coming to its the proof of these two results. Let if possible pi pj intersection, this is not equal to 5, I is not equal to j, खाली नहीं. तो मान लिया let x belongs to pi intersection pj. It implies x belongs to pi and x belongs to pj. अब x pi को belong करता है. It implies there exists some pi belongs to p and some pj belongs to p such that what is x? X is equal to, you will write as sum modulo, right? And then you will write x as pj plus rj. क्योंकि x जो है वो pi में भी है, x pj में भी है. ठीक है, तो कोई pi p को बिलोंग करेगा, कोई pj भी p को बिलोंग करेगा. So that x is represented as a sum modulo of this and x is represented as a sum modulo. सब दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है. It implies x is equal to pi sum modulo this is equal to sum modulo pj and rj. Right? It implies अब जब इनको माइनस करेंगे, ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो यह पी आई माइनस पीजे इज इक्वल टू आर जे पीजे, पी आई माइनस पीजे इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो आर जे माइनस आर आई आएगा ना आपका, अगर आप सपोज करो इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, तो ये जो है एक रैशनल नंबर बनेगा. इट इज अ रैशनल नंबर. ठीक है जी. सो अब सिर्फ जब आप एक्सप्रेस करेंगे यू विल राइट पी आई माइनस पीजे इज अ रैशनल नंबर. अब उसका रीजन क्या है, और जब पी आई माइनस पीजे रैशनल हो जाएगा इसका मतलब पी आई इज इक्वल टू पी, राइट. अब क्यों है ये रैशनल नंबर, आप ध्यान से देखो. पी आई, ये जो सम मॉडुलो हमने लिखा है दोनों आपस में इक्वल है. पी आई, अब सम मॉडुलो का फॉर्मूला क्या है, पी आई प्लस आर आई और पी आई प्लस आर आई माइनस 1. ठीक है जी. उसी तरह सम मॉडुलो, इन दोनों का सम मॉडुलो का क्या फॉर्मूला है, पीजे प्लस आरजे. अब इस तरह से नहीं लिखेंगे, यू विल नॉट राइट लाइक, अब सीधा ये लिख के उसके बाद ये एक्सप्रेशन ये साइड में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हैविंग द वैल्यू, आप सीधा इसको इधर उधर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और क्योंकि इसकी वैल्यू है, वन इज पीजे प्लस आर आई, पीजे प्लस आर आई माइनस 1. सिमिलरली पीजे प्लस आरजे एंड पीजे प्लस आरजे माइनस 1. ठीक है जी. अब आप जब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी आई माइनस पीजे करेंगे तो ये बनेगा आर आई माइनस या आर जे माइनस आर आई. जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दो वैल्यूज हैं इसके, दिस और दिस और दिस. तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस ये भी कट जाएगा, तो पी आई माइनस पीजे इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आर जे माइनस, अगेन इट इज अ, in either case it is a rational number. So pi is equivalent to pj.
Since P has only one element from each equivalence class. Since P has only one element from each equivalence class. ठीक है जी? So we must have I is equal to J. So what does it mean? वो कह रहे हैं PI किसके इक्वलेंट है? PJ के. ये सारे PI जो है ये कहाँ से आ रहे हैं? देखो PI और PJ आ कहाँ से रहे हैं? P में से. ठीक है जी? और इसका मतलब PI जो है वो भी डिफरेंट क्लास से आना चाहिए, PJ भी क्या है? डिफरेंट क्लास से आना चाहिए. Since P has only one element from each equivalence class, अगर एक ही equivalence class से has only one element from each equivalence का इसका मतलब I जो है वो J के बराबर होना चाहिए. It implies I is equal to J, which is a contradiction. Which is a contradiction. किस बात की contradiction आ गई बेटा? अगर वो दोनों एक ही P में जितने एलिमेंट्स आ रहे थे हर एक जो था वो एक एक इक्विवेलेंस क्लास में से आ रहा था, और अगर दो एलिमेंट डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास में से आ रहे हैं तो उनका डिफरेंस रैशनल नहीं होना चाहिए, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इरैशनल होना चाहिए. ठीक है जी? ये तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि PI माइनस PJ क्या बन रहा है? रैशनल नंबर बन रहा है. आप यहाँ से भी सीधा ही कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि PI माइनस PJ रैशनल नंबर नहीं बनना चाहिए, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट एवरी एलिमेंट is coming from the different equivalence class, and if the elements are coming from the different equivalence class then their difference will not be a rational number. So hence our supposition is wrong. PI intersection PJ is equal to 5 for all I not equal to J. ठीक है जी? अब हमारा आ गया, अब सेकेंड पार्ट हमने प्रूव करना है. लेट सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि प्रूव करना है यूनियन ऑफ PI इज इक्वल टू द इंटरवल 0 to 1. लेट X belongs to the interval 0 to 1 be any real number. ठीक है जी? इट इम्प्लाइज X लाइज इन, अब X को इंटरवल, X को पॉइंट है इंटरवल में, और इंटरवल जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड हो गया, तो X किसी ना किसी इक्विवेलेंस क्लास में से आएगा. ठीक है जी? इट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू सम इक्विवेलेंस क्लास and is equivalent to Y and is equivalent to Y of P. ठीक है जी? तो हमने कह दिया कि वो किसी Y के क्या है? इक्विवेलेंट है. Y of P. But if X differs from Y by a rational number, Ri, then X किस में आया? किसी PI में आया. ठीक है जी? If X differs from Y by a rational number Ri, then X belongs to PI. देखो हमने कहा X किसी इक्विवेलेंस क्लास में पड़ा हुआ है. अब इसमें ये सारी मान लो इक्विवेलेंस क्लासेस है, या इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें किसी ना किसी एक इक्विवेलेंस क्लास में है. ठीक है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मेंबर Y पड़ा हुआ है जिसके ये इक्विवेलेंट है. सो इट इज इक्विवेलेंट टू Y ऑफ P. और ये सारे क्या है? ये जो सारे मेंबर्स हैं, सपोज करो यहाँ पे Y1 Y2 Y3 Y4, ये सारे P के मेंबर्स हैं, तो किसी ना किसी P के मेंबर से ये कोइंसाइड कर जाएगा. तो मान लिया हमने किसी Y के साथ ये जो है इक्विवेलेंट टू it is equivalent to any element Y of P. अगर X Y से रैशनल नंबर से डिफर करता है तो X किसी ना किसी PI में चला गया. ठीक है? रीजन क्या है? देखो X is equivalent to Y, it implies X minus Y is equal to Ri. It implies X is equal to Y plus Ri. ठीक है जी?
अब x जो है वो 0 to 1 में है. It implies x is less than 1. It implies y plus ri is less than 1. It implies y plus ri. जब less than 1 कब वैल्यू देता है सम मॉडुलो की? इतनी वैल्यू कब आती है? जब लेस देन 1 होता है. तो हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया. ठीक है जी. और y प्लस आर आई किसके बराबर है? x के बराबर है. इट इम्प्लाइज x किसके बराबर हो गया? y सम मॉडुलो y और आर आई के. ठीक है जी. बट ये y सम मॉडुलो y प्लस आर आई ये किसका मेंबर है? ये बेटा p का, कि y किसमें से आ रहा है? p में से आ रहा है. p प्लस आर आई का मेंबर है. ठीक है जी. राइट. और इसका मतलब, और ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है. तो x किसमें आ गया? इस सम मॉडुलो ट्रांसलेट मॉडुलो में आ गया, p प्लस आर आई. ठीक है जी. तो x बिलोंग्स टू p प्लस आर आई. इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, ये किसकी वैल्यू है? दिस इज इक्वल टू p प्लस आर आई. इट इज रिप्रेजेंटेड एज pi. सो x किस में आ गया? pi में आ गया. ठीक है. So it implies x pi में आ गया, मतलब यूनियन में आ गया. It implies x belongs to union of pi I running from definitely 1 to infinity ही लिखते हैं हम. It implies, so for all x belongs to 0 to 1 implies x belongs to union pi. It implies the interval 0 to 1 belongs to union of pi. ठीक है जी. But union of pi beta, it is contained in the interval 0 to 1. So therefore the union of pi is equal to the interval, whole interval 0 to 1. Now these two conditions are satisfied. Now next is the step number 3rd or 4th, whatever it is. अब let if possible, p को क्या प्रूव करना है? नॉन मेजरेबल. let if possible p be measurable. Since each pi is translate modulo 1 of p and m is translation या mu, आप mu भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, is translation invariant. ठीक है जी. therefore each pi is measurable. हमने पहले प्रूव किया हुआ है प्रीवियस थ्योरम में. and measure of pi या mu of pi is equal to measure of p. ठीक है जी. what is capital pi? this is a translate modulo 1 of p. right. now measure of union I running from 0 to infinity pi. आप पीछे भी 0 to infinity लिखो कि p नॉट भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. so this is equal to, सारे डिसजॉइंट है, summation I running from 0 to infinity measure of pi. So this is summation I running from 0 to infinity measure of p. So p दो वैल्यूज देगा. 0 देगा अगर measure of p 0 हो जाता है. ठीक है जी. infinity देगा अगर measure of p जो है वो greater than 0. greater than 0 means any value, बड़ी से बड़ी वैल्यू. तो कितनी वैल्यू देगा? उसका measure कितना आएगा? infinity आएगा. So let it be number 1. उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद आपने अब मेजर ऑफ आपने किसका निकाल दिया? एक मेजर ये निकाल दिया. अब एक मेजर और निकाल लेंगे. बट measure of union of pi, this is equal to interval 0 to 1 and measure of the interval is equal to length of the interval and it is equal to 1. बेटा वही यूनियन है, वही मेजर आपने एक बार ऐसे निकाला, एक बार ऐसे निकाला, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. देखिए इसका मेजर 0 इंफिनिटी आ रहा है, इसका मेजर 1 आ रहा है, which is a contradiction to number 1, which is a contradiction to number 1. Hence our supposition is wrong. He is a
non-measurable set. So this is an example of a non-measurable set in the interval 0 to 1. So this is all about today's lecture.